थैंक यू पोजी। हियर अनदर क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है। यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस। लेट अस टॉक अबाउट अ केस वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, वेयर इट सेज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर passes through a copper conductor. Resistivity is given to us, and the radius of cross section is also given to us as 5 mm. Find the mobility of charges if their drift velocity is this. So we know well drift speed is written as mobility multiplied by electric field. यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है दिस पाई आर स्क्वायर, दिस पाई इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, दिस ओम मीटर, and drift speed Vd is given to us as 1.1 into 10 to power minus 3, and we want to calculate the value of mobility. So electric field को you can relate it with the given relation as E can be written as rho J. J is current density, it is rho I divided by cross sectional area. So we are having cross sectional area, we are having resistivity, and if we substitute the value, क्वेश्चन में mobility का value calculate करना है, so still there is one parameter I we need to make use of. So in this situation, current का value question में already specified है 5 ampere. So from here the value of mobility we are getting is Vd divided by E. So it is Vd divided by rho I by A. So if we substitute the values, it is 1.1 into 10 to power minus 3 multiplied by cross section area is pi into 25 into 10 to power minus 6 divided by resistivity here is 1.7 into 10 to power minus 8 multiplied by 5. So this is the mobility we want to calculate. अब again जैसा मैं कई बार बताता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट को देख के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ लूज करते हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस कैलकुलेशन. लेट मी सॉल्व दिस. So this gives you 1.1 into 3.14. This 5 gets cancelled out. Multiplied by 5 divided by, here this is only 10 to power minus 1. So this is 17. I just removed this decimal from here. So this comes out to be 1.1 into this 15.7 divided by 17. So अगर 15.7 को 1.1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, so this gives you 157. This gives you 7.271, 17.27. This 17.27 divided by 17, if you divide, this gives you 1.01. So this 1.01 SI units. That's the answer to this problem. That's the मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर. आपको यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं, यूनिट आप सब जानते हैं. मोबिलिटी की यूनिट यहाँ पे क्या आएगी, दिस मीटर पर सेकेंड, एंड हियर इट इज वोल्ट per meter. So correspondingly you can check the unit of mobility also. Thank you, Pooji. Here we'll be talking about calculation of resistance due to radial conduction. So यहाँ पे it says the space between two concentric conducting spheres of radii A and B, where B is greater than A, is filled with a medium of resistivity rho. It is asking the resistance between the two spheres क्या होगा for radial conduction. So here in this situation there is an inner shell, there is an outer shell. The inner shell has a radius A, outer shell has a radius B, और बीच का जो medium है it has a resistivity rho. हमको resistance calculate करना है between these two spheres. So in that case as cross sectional area for the radial flow of current, यहाँ पे current जो flow होगा इसके अंदर radially होगा, और cross sectional area is increasing. So to calculate at a distance x we consider an elemental shell which is of width dx. और अगर dx width का हम shell consider करते हैं, तो for this elemental shell the resistance is dr. So dr is written as rho through the shell of width dx. If current is flowing radially, it is rho dx divided by cross sectional area is 4 pi x square. So in this situation all such resistances are in series combination. We'll write r as integration of dr, which is integration of rho by 4 pi dx by x square integrated from a to b. So that directly gives you the resistance, which is rho upon 4 pi. Here it is minus 1 by x, limits from a to b, and that value of r we are getting is rho by 4 pi. This 1 by b, or this becomes 1 by a minus 1 by b, क्योंकि minus sign भी यहाँ पे है. So this gives you rho multiplied by b minus a upon 4 pi a b. That's the answer for this.
Thank you, Poji. Here again a basic case where we'll be talking about the current flow और charge flow in a conductor, क्योंकि basic भी हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट कई बार यहीं पे गलतियां कर देते हैं. Here we'll be talking about charge flow due to time varying current. It says a current through a wire depends on time as I is alpha naught t plus beta square. और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यूज भी गिवन है, तो करंट का वैल्यू आ जाता है 20t plus 8t square. It is asking find the charge cross through a section of wire in 15 seconds. So I you can write as dq by dt, or this is 20t plus 8t square times dt. Now if we integrate this relation, this gives you the charge flow, or total charge flow. It is integrated from 0 to 15. So it is 20 t square by 2 plus 8t cube by 3, and limits हम डालेंगे 0 to 15. So this becomes 10 multiplied by t square is 225 plus 8 times 15 का cube, this 3375 divided by 3. So this can be written as 2250 plus 8 multiplied by 3375 by 3. So it becomes 1125 multiplied by 8 is 9000. 2250 plus 9000, that gives us 11,250 कूलम. दैट्स द आंसर फॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस. आपको सिर्फ बेस लॉजिक दिमाग में रखना है एंड स्लाइड कैलकुलेशन दैट विल हेल्प यू इन डायरेक्टली गेटिंग द रिजल्ट. करंट अगर टाइम फंक्शन में है तो चार्ज फ्लो कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय राइटिंग करंट एज डी क्यू बाई डी टी एंड इंटीग्रेटिंग. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स अगर यहाँ बेसिक लेवल पे एनालाइज करें तो ओम्स लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस. हियर इट इज आस्किंग अबाउट करंट ड्यू टू अ टाइम वेराइंग ईएमएफ इन सर्किट. स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ डीसी बैटरी से ही केसेस हैंडल हो जाते हैं, टाइम वेराइंग ईएमएफ हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट में आता है. ऐसा नहीं है. देयर कैन बी अ डायरेक्ट करंट ईएमएफ, डीसी ईएमएफ इन केस ऑफ वेरिएशन विद टाइम ऑफ ईएमएफ इज देयर, और हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट ओम्स लॉ या सर्किट एनालिसिस लगाना पड़ सकता है. वेल लुक, दिस सेज फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t इक्वल टू 3.2 सेकंड निकालना है, whereas the voltage as a function of time is given and the circuit is also given. सो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम यूज करें तो 3.2 सेकंड यहाँ कहीं होगा. दिस इज व्हाट इज 3.2 सेकंड. सो 3.2 सेकंड पे वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, कि कितना वोल्टेज होगा और उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट कैन बी इजीली हैंडल्ड. सो दिस पॉइंट वोल्टेज v कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली एज at 3 second voltage is 5. So this will be 5 plus 5 is the voltage at 3 second. तो जो 0.2 सेकंड का डिफरेंस है यहाँ पे वोल्टेज में कितना वेरिएशन आएगा, इट विल बी स्लोप मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन वी कैन राइट एज 10 minus 5 divided by 4 minus 3 multiplied by 0.2. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन सिर्फ 0.2 सेकंड का है, तो v will be 5 plus दिस विल बी 1, दैट इज 6 वोल्ट. और अगर ये वोल्टेज 6 वोल्ट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 6 minus 5 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. अगर हम v कैलकुलेट करें अक्रॉस R, so it comes out to be 6 minus 5, which is 1 volt. So 1 volt or 1 ampere means it gives us current is 1 by 1, that is equals to 1 ampere. That's the answer to this problem. यहाँ पे आप directly current calculate कर सकते हैं using Ohm's law. This 1 volt is applied across 1 ohm. So important यहाँ पे है कि कैसे हमने ग्राफ को यूज करके वोल्टेज कैलकुलेट किया. That's important to understand.